Good morning, students. Now, lesson number 15. Open your textbook. Lesson number 15. Some natural phenomena. In class 7th, you read about winds, storms, and cyclones. You learn that can cause a lot of damage to human life and property. You also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent in this chapter. We shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize caused by this phenomena. इसमें क्या है कि हम अगले स्टैंडर्ड में देखा है कि अर्थक्वेक या फिर कुछ भी और है अर्थक्वेक है या कुछ भी और है जिससे हम कैसे बच सकते हैं या फिर कुछ भी और ऐसे फिनोमिना सम नेचुरल फिनोमिना है जिससे हम उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि फर्स्ट है लाइटनिंग. यू माइट हैव सीन sparks on an electric pole when wires become loose. क्या है? एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसके वायर थोड़े लूज हो गए हैं. This phenomena is quite common when a wind are blowing and stretching the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark but on a scale. ह्यूज स्केल्स. कैसे ऐसे कोई वायर है या फिर कोई ऐसे प्लग है जिसमें हमने देखा है ना कि कभी भी वो स्पार्कल्स हो सकते हैं बिजली के, हमने देखा है ना वो. एन एक्सीडेंट टाइम people did not understand the cause of these sparks. They were therefore fed lightning and thought that the worth and goods was visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charge in the clouds. We need not be afraid of lightning, but we have to take restriction to protect ourselves from the daily sparks. The sparks that the Greek know about. जैसे कि the ancient Greeks know is early as 600. We see that when amber is kind of risen. What is amber? So the amber is a kind of risen. Was but with fur it attract light objects such as a hair. You might have seen that when you take off woolen or clothes your hair can stand on ends. If you take off these clothes in the dark you see even a spark and hear crackling sound. In 1752 Benjamin Franklin, an American scientist, showed the lightning and the sparks from your clothes are incidentally the same phenomena. However, this reason look 1,000 years. जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि पॉलिस्टर क्लॉथ्स या फिर कुछ है, हम कभी उसमें देखते उसमें कभी कभी ऐसे स्पार्क्स होते हैं, है ना. इसमें टेक्स्ट बुक्स में ऐसे कहा गया है कि ऐसे कभी कभी स्पार्क्स हो सकते हैं. जो 1715 में बेंजामिन फ्रैंकलिन है जो अमेरिकन जो साइंटिस्ट है उसमें भी ये उसको समझने के लिए कितने 2000 वर्ष लगे थे. I wonder why they took also many years to realize the similarity. Scientific discoveries are a result of
hard work by many people. It can sometimes take a long time. We shall now study some properties of electric charges. अभी हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे. We shall also see how they are related to the lighting in the sky. Let us perform some activities to understand the nature of electric charge. हम ऐसे कोई भी है समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज से हैं. But we shall first what you might have played as a game when you rub a plastic scale on your dry hair. The scale can attract very small piece of paper. जैसे कि एक्टिविटी 15.1 है चार्जिंग बाय rubbing. Take a used ball pen refill and rub it. इसमें क्या है? With a piece of paper, bring it close to small piece of paper. Take care not to touch the rubber end of the refill with your hand or with. Repeat the activity with small piece of dry leaf. Husk and mustard seeds. Record your observation. इसमें क्या है, एक जो पेन है उसकी जो रिफिल है वो उसको लेनी है, एक साइड से उससे अच्छे से कसना है, लेकिन वो जो पेपर लिया है उसको नजीक लाना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे हाथ या फिर किसी को टच करना नहीं चाहिए. फिर लीफ लिया है, फिर सीड्स के लिए, और फिर हमें इसे ऑब्जर्वेशन करना है. व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल और रबर विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या है? फिर प्लास्टिक हमने रिफिल लिए पॉलीथीन के साथ, वो स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. सिमिलरिटी व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रबर्ड विथ ड्राई हेयर. क्या है? फिर उसको उसमें ड्राई हेयर में करना है. एक्वायर अ स्मॉल चार्ज. दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. क्या है? उसे बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट. What are charge objects? So the object that acquire a small charge are called charge objects. Let's try to charge some other object at that similarity to you. जैसे कि 15.2. Collect the object and the materials. Listen to the table 15.1. Try to charge it by rubbing with the materials method in the table. Record your find it. You can add more items in the table. यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट रबर्स, मटेरियल्स यूज्ड फॉर रबरिंग, does not attract piece of paper या चार्ज नॉट चार्ज. तो रिफायर, पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ्स. फिर यहाँ पे बलून दिया है, तो पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ एंड ड्राई हेयर. तो इरेजर, तो वुल, स्टील स्पून, तो पॉलीथीन एंड वुलन क्लॉथ. जैसे कि 15.3 है चार्ज टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर interaction. We shall select some object from table 15.1 from the next activity. जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा दिया है जो एक्टिविटी है 15.3. Inflate 2 balloons. यहाँ पे क्या है? 2 balloons लिए हैं. Hang them in such a way that they do not touch each other. क्या है? उसको हमें टच नहीं किया है. Rub both the balloons with a woolen cloth and release them. What do you observe? फिर हमें उसमें क्या है? वुलन क्लॉथ के साथ वो करना है. फिर क्या होता है वो हमें देखना है. नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी. इसमें क्या है? रिपीट एक्टिविटी की है. विद द यूज्ड पेन रिफिल्स. क्या है? पेन रिफिल्स ली है. रब 1 रिफिल विथ पॉलीथीन. एक रिफिल को क्या किया है? पॉलीथीन के साथ उसने अच्छे से रब किया है. Place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. 15.2 में जैसे मैं देखा था, rub other
रिफिल विथ ऑल्सो पॉलीथीन, क्या किया है उसमें साथ वापस पॉलीथीन के साथ. ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल. बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड. इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर. हमें क्या करना है, वो उसके साथ वो रब किया था, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उसको हमें अपने हैंड को टच करना नहीं चाहिए. डू द टू अटैक ईच अदर और रिपेल ईच अदर. In this activity, we have brought close together the charged objects that were made of the same material. What happened if two charged objects made of different materials are brought close to each other? Let's find out. क्या करना है हमें, वो फिर है जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि rub a refill and place it gently in glass tumbler as there for 15.3. ऐसे में दिखाई दिया है कि हमें उस टम्बलर है उसमें हमें ध्यान से ब्रिंग अ इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफाइल एंड ऑब्जर्व. फिर वो रिफिल है उसमें चार्ज किया है, फिर उसमें क्या होता है वो हमें देखना है. लेट्स समरीज टू द ऑब्जर्वेशन. क्या हुआ है हम जैसे कि देखना है. अ चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून. क्या है हमें वो अ चार्ज रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट टू चार्ज रिफिल. क्या हुआ है उसमें से वो अट्रैक्ट हुआ है. डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल. कैन वी से दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ charges? Can we also say that the charges of the some kind repel each other? Will charges of different kind attract each other? जैसे कि हमने वो इस तरह से देखे है, वो डिफरेंट साइज के वो हमने अच्छे से देखा था. इट इज अ कन्वर्जेशन टू सेल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज द रबर्ड विथ अ सिल्क एज पॉजिटिव. क्या है वो हमें जैसे कि हमने वो ग्लास में लिया था कि वो होता है. द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव. वो क्या है अदर प्रकार के जो चार्ज है वो क्या है नेगेटिव. इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रोड इज what near a charged plastic straw rubbered with polythene there is attraction between the two. जैसे कि हमने वो देखा है कि वो पॉलीथीन या फिर वो हमने जिसके साथ रब किया था प्लास्टिक से उसके नजीक लगा क्या होता है वो हमने ऐसे ऑब्जर्वेशन किया. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? योर ग्लास दैट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करंट. The electric charge generated by rubbering are sticks. They do not move by themselves. When charges move, they continues an electric current. You have been reading about electric current since class. हमने आगे के क्लास में सीखा था वैसे. The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes wire hot is nothing but a motion of चार्ज. जैसे कि हमने आगे का में देखा था ना बल्ब प्रकाशित कैसे होता है या फिर और कुछ वैसे. ओके नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आज ने जितना समझाया उतने जिसके क्वेश्चन है वो आपको वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं. ओके नाउ एक्टिविटी फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ओके थैंक यू.